इसके आगे श्वेता मानस मंडली की कीर्तन गाया करेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। का समय प्रारंभ हो रहा है 11:03 से।
सतगुरु तेरे इष्ट को बारंबार परम आदरणीय मनश्री आइए भगवान श्री राम की भजन के बिना भाव भक्ति के बिना मिलते नहीं है। यही प्रसंग पर आधारित यह भजन प्रस्तुत है। आइए
देवकी नंदनाय च प्रणत कलेश नाशायं गोविंदाय नमो नमः। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दो हाथ। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा दिन सम विषय स्वर्ग परगा। भगति पक्ष हट नहीं सकताई, दुष्ट कर्म सब दूरी बनाए। भरत प्रिय राम राम चंद्र की। सम्मानित देवी शिल्पा का काम बहनों, आप सबको नमन प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास। कथा प्रसंग उत्तरकाल की कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं कि भाई हे संत समाज हो कहे, जो व्यक्ति मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, मेरा भक्ति प्राप्त करना चाहता है, मेरा आशीर्वाद देना चाहता है, कहे उस व्यक्ति को हमेशा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर की रट लगाना चाहिए, भगवान शंकर की हमेशा पूजा पाठ उसके चिंतन में लगी रहनी चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम कह रहे हैं जी। आइए चौपाई में प्रीति सदा सज्जन संसर्गा दिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। गोसाई जी महाराज लिखते हैं भगवान शंकर कहे कि हे गीता पार्वती कहे, जिनकी सदा संगति का छाप पड़ता है व्यक्ति पर भी। जैसा संगति रहेगा ना वैसे व्यक्ति का छाप पड़ जाता है। जिस जगह पर बैठेंगे उसका भी छाप पड़ता है। अच्छे जगह पर बैठेंगे तो अच्छा जीवन चलेगा, खराब जगह पर बैठ खराब होगा जी। अच्छे संगति से अच्छा प्रभाव पड़ेगा जीवन में। तो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा गोसाई जी महाराज कहते हैं कि नहीं, जिनकी सदा सज्जनों के साथ रहती है, उठना बैठना रहती है, जिंदगी रहती है, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा उनके ऊपर भगवान की कृपा करते हैं। उस व्यक्ति को ना ये संसार के विषय भोग, ये स्वर्ग तथा मोक्ष, ये सब जितने भी ये सुख के साधन है ना, वो सब भी समान लगते हैं, दुख है उसके लिए। और भगति पक्ष हट नहीं सकताई, दुष्ट दर्द सब दूरी बहाई। गोसाई जी महाराज पुनः कहने लगे, जो भक्ति पक्ष में हट करके हमेशा रहते हैं, भक्ति मार्ग में रहते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं और दुष्ट कर्मों को त्यागते हैं। जो दुष्टता है जीवन में, नाना प्रकार के खड़े विकार है, उसको करते हैं जी और त्याग करके हमेशा अच्छे कर्मों पर चलते हैं ना, उसको सदा भगवान की कृपा दृष्टि बना रहता है। ऐसे प्रसंग में भगवान श्री राम जी सब संत समाज से करने लगे भाई श्री राम रामचंद्र की। चंद्र की जय।
कहने लगते हैं जी, जो मेरे गुणगान, जो व्यक्ति जिस प्रकार से आपके ग्राम की नौका भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का नाम ले रहे सुन रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति मेरे हमेशा गुणगान करते हैं जी, मेरा नाम लेते हैं जी, मेरे नाम को जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं जी, और इस संसार में जो ममता मत और लोभ से रहित है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंध के क्या केवल काम क्रोध मोह अहंकार एक नरक जाने का रास्ता है जी। तो भगवान कहते हैं कि ममता को छोड़ दो, मत को छोड़ दो, को छोड़ दो, आज राम प्रकाश कर नहीं रहेगा, बद है चला जाएगा, धन नहीं चला जाएगा, ये मोह अहंकार इसको छोड़ दो। कहते ताकर सुख कोई जाने परमानंद संतोष, भगवान कहे उस व्यक्ति को कहे मैं परम आनंद देता हूं कहे, और जितने भी संसार में सुख है वही व्यक्ति जानते हैं कहे जो मेरे सानिध्य में है, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, जो मेरे नाम को जपते हैं, जो मेरे नाम को लेते हैं ना, इस व्यक्ति के संसार का जो सुख है यह कहे की कीर्ति है जी, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं। भाई क्या और रामचंद्र की हमारे प्रभु श्री राम की भारत भूमिया और पूरी का गुणगान करते हैं। प्रभु राम की अयोध्या, राम लला का भाव है, भाव है। प्रभु राम की अयोध्या, राम लला का भाव है, भाव है। भारत के जगत गुरु
जनक कुल बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण प्यारे। गोसाई जी का लिखते हैं भगवान इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान की। अगर भगवान श्री राम ने जो किया माता पिता का आज्ञा का पालन, प्रजाजनों से प्रेम, गरीबों से रिश्ता, गरीबों से रिश्ता नाता, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य के साथ बैठना, उठना, अच्छे व्यक्ति के साथ रहना, अच्छे ध्यान पर रहना, ये सारी जो भगवान श्री राम की दिनचर्या है, उनका जो अनुसरण करेंगे ना, तो भगवान श्री राम के जो अमृत के समान मधुर वचन जब सुनते हैं, संत समाज जी किसी की जब सुनते हैं ना, तो जितने भक्त जन थे भगवान श्री राम के चरण में गिर पड़े, भगवान के दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, हे परमात्मा राम, हे कृपा के सागर, हे कृपा निधान है, जननी जनक सुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण प्यारे। आप हमारे माता पिता गुरु और प्राणों से बढ़ के हमारे प्यारे भगवान कहे, आप धन्य है कहे, आप हमेशा भक्तों पर कृपा दृष्टि कहे, हम आपके ऊपर 10 कदम बढ़ाते तो हमारे ऊपर आप 100 कदम बढ़ाते भगवान कहे, आप धन्य है, आप धन्य है करके जी जितने भी संत समाज थे जी भगवान के चरण कमल में गिर पड़ते हैं। भाई सियावर रामचंद्र की जय। भारत प्रिया चक्र की जय। प्रसाद के भाव आधारित की प्रस्तुत है। दिल के प्रभु का नाम लिख दो, आजा जिंदगी में प्रभु नाम लिख दो। दिल के प्रभु का नाम लिख दो, दिल के प्रभु का नाम लिख दो, आजा जिंदगी में प्रभु नाम लिख दो, आजा जिंदगी में प्रभु नाम लिख दो। दिल के प्रभु का नाम लिख दो, दिल के प्रभु का नाम लिख दो, आजा जिंदगी में प्रभु नाम लिख दो, आजा जिंदगी में प्रभु नाम लिख दो।
साइड में आप देखते हैं इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते स्वार्थ बंधा है। जब बाप के पास धन नहीं रहेगा तो बेटा उसकी सेवा नहीं करेगा। तो ये संसार स्वार्थ बंधा है। जितने भी ऋषि मुनि थे संत समाज थे तनु धनु धाम राम कार्य भगवान श्री राम से कहने लगे चरण पकड़ करके हे परमात्मा राम कहे आप तन धन और घर के हितकारी हैं। किसके हितकारी है कि जो भक्त है भगवान के उसके घर के हितकारी है, उसके तन के हितकारी है। राक्षस के तन के हितकारी नहीं है भगवान के। जो सम्मान कपट करके उनके तन धन के हितकारी है और सब तरह से शरणागत दुख को दूर करने वाले राम के हैं। जितने भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी से पापी व्यक्ति आपके शरण में जाते हैं ना उसके सब दुख को आप दूर कर लेते हल लेते हैं। और असी सिद्ध तुम विरुद्ध न को माता पिता स्वागत रखो। और आगे कह ले भाई आप तुमने ऐसी शिक्षा कौन दे परमात्मा कहे इस संसार में तो माता पिता भी स्वार्थ में तत्पर है। बच्चे का सेवा क्यों करते हैं माता पिता जी कि भाई तुम आपका मेरा सेवा करे। इस तरह संसार स्वार्थ से बंधा है। निस्वार्थ कोई है तो भगवान है। निस्वार्थ भाव से संत भक्त की रक्षा करने वाला है तो भगवान श्री राम है। ऐसे भाई सफाई के माध्यम से तो राष्ट्र समाज में सुना रहे चंद्र की जय। चंद्र की जय। माता जी का बहुत प्यारा भजन लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी मानस मंदिर से रमैया मानस मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से गाकर हम सभी को विचार किए। अभी ये कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर नवगढ़ मानस परिवार रामाटोला डोंगरगढ़ आप अपने पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान की अमृतमय कथा को आगे बढ़ाएंगे। और आगामी के लिए रागिनी मानस मंडली कोड़ेगेरा जयपुर, आगामी पाली के लिए रागिनी मानस मंडली
कोड़े के जयपुर अपने पार्टी से तैयार रहेगी। उसके आगामी सुविधा मानस मंडली की गिरिजा तैयार रहेगी। उसके आगामी परमेश्वरी मानस मंडली कोटेरा बालोद तैयार रहेंगे। उसके आगामी खतीश मानस मंडली भारद्वाज शक्ति तैयार रहेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। वर्तमान पार्टी को लक्ष्मी नारायण गुरु जी शिव और भागीरथी साहू सड़क पारा के द्वारा 50 रुपये सम्मानित किया गया। दुलारी साहू मिस्त्री कामनी एवं कनिष साहू की तरफ से 20 रुपए, कोमल सुजल समीप पेंट्री वाले की तरफ से 20 रुपए, पिंकी साहू संस्कार साहू की तरफ से 50 रुपए, राजेश्वर साहू कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि जागीर चापा की तरफ से 50 रुपए, प्रिंसी अंशु एवं अंशिका की तरफ से 20 रुपए, तेरस सरस्वती हिमांशु मायरा इनकी तरफ से 100 रुपए, तामसी मानवी आकाश इनकी तरफ से 50 रुपए, मनोज साहू सुप्रिया साहू की तरफ से 50 रुपए, श्री जगत राम साहू की सुपौत्र तनु साहू की तरफ से 30 रुपए, तेरस साहू किराना स्टोर की तरफ से 50 रुपए, खुशी साहू की तरफ से 20 रुपए, रेत माफिया एंड ट्रांसपोर्ट राहुल साहू की तरफ से 50 रुपए, सुख सागर यादव की तरफ से 50 रुपए, अशोक किराना ईश्वर की तरफ से 50 रुपए, शिव कुमार साहू की तरफ से 50 रुपए, तेरस साहू पार्षद नवागढ़ की तरफ से 50 रुपए, शिव कुमार साहू की तरफ से 20 रुपए, छोटे साहू नवागढ़ की तरफ से 20 रुपए, भोला साहू की तरफ से 50 रुपए, रथराम साहू की तरफ से 10 रुपए, पद्मनी खेमलाल की तरफ से 20 रुपए, मनोहर कृष्ण नवागढ़ की तरफ से 50 रुपए, शिव कुमार की तरफ से 20 रुपए, दिव्यांग साहू यश साहू दोनों भाई की तरफ से 100 रुपए से सम्मानित किया गया। रघुया हमारे मंडली मुड़पार की कोई भी सदस्य आकर के पुरस्कार की राशि ले जाने की कृपा करेंगे जनेश्वर के हाथों से। हाँ, एक नाम छूट गया था, पैसा उसमें चला गया है। नवगढ़िया थे की तरफ से 50 रुपए और 20 रुपए राम जी की तरफ से सम्मानित किया गया है।
लखन से रामचंद्र की जय। डोंगरगढ़ का पाली प्रारंभ हो रहा है 11:47 से।
आदरणीय सुता समाज ग्राम कोटिया के समस्त ग्रामवासी वाले महिला ग्राम चरित्र मानसी कर क्षेत्र को हम संतान की मांग और संतोष जनात करके हमें तीन में करोड़ में शांति में भी विश्व को माता महिला आदरणीय गुरुजी महिला आदरणीय निर्णायक पद्धति महिला और समस्त आयोजन समिति परिवार का आप सबों के बीच आप सबों के श्री चरणों श्री मंगल दिखाना परिवार का बोला जगन्नाथ के नवाजा के यह वो दलेगा मन के रहने से दिल का आइए एक चढ़ाव के पश्चात आप सबका तरफ से चले के वो और इन भाव से आप सबका चौपाई की ओर नीचे यशोमती मैया से बोली किनारा राधा क्यों गोरी मैं क्यों काली यशोमती मैया से बोली यशोमती मैया से बोली राधा क्यों गोरी मैं क्यों
आदरणीय श्रोता समाज, ये जो अभी चलत रसिया को हका है रामचरितमानस की चौपाइयाँ दिया आप सब ये है रामचरितमानस की चौपाइयाँ और ये चौपाइया आपला और हमला सबला साथ में मिलकर के गाना है तो समस्त श्रोता समाज से मैं निवेदन चाहूँगा आप सभी के दोनों हाथ ऊपर हो। आइए सभी के दोनों हाथ ऊपर हो और ताली के साथ सब एक साथ गाएगा 1 2 3 4 एक राक्षस रस्ती पे इंसान इतना होगा राक्षस असुर देखे हैं वो रेडिकल तो इंसान भी रहे लेकिन ओकर गलत विचार पूरा विचार के कारण हक होना असुर मानना आप सब परिचित हो कि रावण भी एक इंसान ही रावण भी एक इंसान ही और ब्राह्मण कुल के वो नाती ही लेकिन ओकर गलत विचार के कारण अब वो रावण था आज भी असुर और यहाँ पर बसंत ऋषि महाराज ने देखा कि हे तेरे जगत सुख उपकारी जगत में बिना निःशुल्क जगत में बिना निस्वार्थ के उपकार करने वाले सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं कौन है एक तो प्रभु श्री राम जी स्वयं आप और दूसरा आपकी भक्त दूसरा आपकी सेवक और आप सब ये बात से परिचित हो कि ये दुनिया में स्वार्थ से सब इंसान स्वार्थ के लिए बने हुए हैं ना तो कोई भाई भाई काम आते ना कोई बहनी बहनी कोई काम आते ना कोई काम और भाई काम आते स्वार्थ के लिए सब बनते अगर कोई ना का बात मानना है तो वो स्वार्थ के लिए दूसरे के लिए मीठा मीठा वचन बोलता है और एक सुंदर सा गीत लिखे रही सोचे सिद्धि स्वार्थ लड़का
तुलसीदास जी महाराज कहते था कि निस्वार्थ के सिर्फ दो ही कौन निस्वार्थ के मेरा सब काम करने वाले कौन है भगवान श्री राम जी स्वयं और एक तो दूसरा आपके भगत आपकी सेवक और जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। जितना भी भाई बहन मित्र दोस्त यारी ये सब स्वार्थ के लिए देखे हैं। हे प्रभु उनमें स्वप्रेम में भी परामर्थ भाव का नहीं है, उनमें प्रेम का भाव स्नेह का भाव बिल्कुल नहीं रहता। स्वार्थ के लिए सब दुखा नहीं है। और आगे दूसरा से जाना चौपाई का कार्य इस तरह आयोग सुंदर से भावों के पश्चात आप सबके बीच में अपना प्रयास करें।
सबके बच्चे श्री रसस्थानी सुनी रघुनाथ हृदय हर्षानी वो सामने तुलसीदास जी महाराज चौपाई वाली किसका सबके वचन प्रेम रसस्थानी सबके प्रेम में सनी हुए यह वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के हृदय में हर्षित हुए। यहाँ पर वचन के बाद किए गए महत्ता वचन के बाद और वचन के बाद यही रामचरित मानस में एक सुंदर कांड में पंचम सोपान सुंदर कांड में भी वचन के बारे में ही बात की गई। कौन से चौपाइयों जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय ये वचन के पापार्य और वचन के बड़ा ही महत्व है। जब भी हम काकों से बात करें जब भी हम काकों से वार्तालाप करें बातचीत करें हमेशा हम ध्यान रखना चाहिए कि हम का बोलत हैं कैसे वाणी की कैसे वचन के हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही वचन के बारे में बताया कि काफी सबके वचन प्रेम रससानी सबके प्रेम से सजे हुए वचन सुनकर सब वचन सुनकर मीठी मीठी बात सुनकर के मीठी मीठी वचन सुनकर के भगवान श्री राम जी के हृदय में बहुत ज्यादा आनंदित आगे हर्षित होकर भगवान श्री राम की खुशी के बारे को नहीं समाती और फिर आज्ञा पाकर सब निज निज ग्रहे देना आया सुपाई सब आज्ञा पाकर के अनुमति पाकर के प्रभु की सुंदर बातचीत के वर्णन करते हुए अपना घर की ओर प्रस्थान करते देवी का वर्णन प्रभु कथनी सुहाई सब आज्ञा पाकर के आज्ञा के पालन करते हुए आज्ञा पाकर के अनुमति पाकर के अनुमति का स्वीकार करते हुए सब बातचीत करते हुए बातचीत के साथ साथ वर्णन करते हुए अपन अपन घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए रामचंद्र की जय। Thank you.
भगवान शिव जी कहते हैं कि के द्वारा रचित ये दोहा माँ भगवान शिव जी माता पूर्णा से कहते कि हे माँ अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप अयोध्या में प्रत्येक नर और नारी अल्लाह के दरबार से बन रहा थे और कहा वे कृतार्थ स्वरूप है और जहाँ स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम के थे भगवान जहाँ सच्चिदानंद ब्रह्मा रघुनाथ जी का राजा है वो अयोध्या नगरी के राजा कौन है भगवान श्री राम सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी के वो राजा है अयोध्या नगरी के राजा भगवान सच्चिदानंद राजा भगवान श्री राम जी और जिला के पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से हम भगवान श्री राम जी का जाना है और आगे की सफाई का पसंद तुलसीदास जी महाराज का इस आइए सुंदर भाव के पश्चात आप सबके बीच में रखते हैं Thank you.
एक बार वशिष्ठ जी वहां पर आए और जब सुंदर के यहाँ सुंदर सुंदर के श्री रघुनाथ जी श्री राम जी थे। एक बार वशिष्ठ मुनि वहां आ जाते और कहाँ थे जहाँ सुंदर सुख के धाम सुंदर सुख के धाम और भगवान श्री राम जी वहां विराजमान है। भगवान श्री राम जी वहां पर स्थापित थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार किया। भगवान श्री राम जी उन्हें देखते बहुत ही ज्यादा आदर करिस प्रेम भाव के साथ ऊपर सम्मान करिस वेलकम करिस सम्मान करिस आदर करिस सत्कार करिस ऐसे भाव। अगर अतिथि अगर काका घर पर अतिथि आवत है ना तो अतिथि के हमेशा आदर सम्मान हमेशा करना चाहिए। अगर चाहे वो अतिथि चाहे वो कोई जीव हो जंतु हो कोई भी अतिथि देवो भव। और जहाँ भी जीव के बाद आते ना अगर हमारे घर के द्वारे में कोई भी आते एक साधारण सी बात कर रहा हूँ कि काका के घर के द्वारे में ब्राह्मण आ जाते कभी ब्राह्मण आ जाते साग आ जाते सब आ जाते है ना। और न जाने किस भेष के हमको नारायण मिल जाए। पता नहीं कोई भेष में भगवान के भेष में हो सकते कि साधु के भेष में आकर के भला भगवान आकर के आशीर्वाद देते दर्शन देते। उसका कारण हमेशा अतिथि के हमेशा मान सम्मान करना चाहिए सत्कार करना चाहिए आदर भाव हमेशा हम सब रखना चाहिए। वैसे ही वशिष्ठ जी के भी यहाँ वैसे ही आदर सम्मान द्वारा भगवान श्री रघुनाथ जी के द्वारा बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार किया और उनके चरण होकर वशिष्ठ जी महाराज और
वशिष्ठ जी महाराज कौन है? पॉइंट वाली बात क्या है कि वशिष्ठ जी महाराज कौन है? भगवान श्री राम भगवान महाराज दशरथ जी के गुरु नहीं थे वशिष्ठ जी महाराज। कौन है? महाराज दशरथ जी के गुरु। हम सब भी गुरु बनाकर ना भैया उसमें थी महाराज दशरथ जी के गुरु की। वो गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ जी महाराज। और जैसे गुरु वशिष्ठ जी वो धाम वहां थी भगवान श्री राम जी के धाम बना, तो गुरु आकर के जैसे दर्शन दे तो गुरु के सम्मान भगवान श्री राम जी बढ़िया आदर सम्मान गुरु गुरु का गु मतलब अंधकार, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जोत भी हमला अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले, जोत भी हमला सही मार्गदर्शन। लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित मंगल देव मानस परिवार रामा टोला डोंगरगढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को गाकर हम सभी को कृतार्थ किए। अभी कथा श्रवण करें। इनके स्थान पर रागिनी मानस मंडली कोड़ेकेरा आप अपने पार्टी से मंचस्थ हुए और भगवान श्री रामचंद्र की कथा को आगे बढ़ाएं। आगामी पारी के लिए श्वेता मानस मंडली की गिरदा, आगामी पारी के लिए श्वेता मानस मंडली की गिरदा आप अपने पार्टी सहित मंच के समीप पहुंचे। उसके आगामी परमेश्वरी मानस मंडली कोटेरा बालोद अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी खगेश मानस मंडली भारद्वाज शक्ति अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी महादेव मानस परिवार सरहद अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। वर्तमान पार्टी की गायक ने जुगन साहू पोड़ी रक्षावाली की तरफ से 20 रुपए, यश साहू इंडियन हैवी ट्रक ड्राइवर की तरफ से 51 रुपए, नंद किशोर साहू शिक्षक पोड़ी की तरफ से 50 रुपए, राम कुमार साहू लसरा 50 रुपए, राजकोट राहुल साहू ठाकुरिया 100 रुपए, रेत माफिया एंड ट्रांसपोर्ट सोनू यादव जी एंड महेंद्र पाल एंड जितेंद्र साहू 50 रुपए, गंगा के पोती खुशी साहू की तरफ से 20 रुपए, खम्मत प्रसाद साहू तेलुगु भाषा सहकारिता विभाग की तरफ से 100 रुपए, स्वर्गीय किरीट भाई साहू के सुपुत्र सोनी हिमांशु गौतम एवं वनुष साहू की तरफ से 50 रुपए, दिनेश टाइल्स मिस्त्री की तरफ से 50 रुपए, सतीश साहू टाइल्स मिस्त्री की तरफ से 50 रुपए, संतोषी राधिका रवि आशिका की तरफ से 50 रुपए, महादेव साहू बेकरी की तरफ से 50 रुपए, तेरस किराना स्टोर भोला साहू की तरफ से 50 रुपए, विनोद उप सरपंच एवं भाई मीनू राम भावेश की तरफ से 50 रुपए, पिंकी साहू संस्कार साहू की तरफ से 50 रुपए, लक्ष्मी नारायण गुरु जी शिव भागीरथी साहू सड़क पर इनकी तरफ से 50 रुपए, राहु मिस्त्री कामनी गणेश इनके तरफ से 20 रुपए, सुजल सनी टेंडू वाले की तरफ से 20 रुपए, सुखसागर यादव 50 रुपए, छत्र साहू 50 रुपए, शाहिद साहू 50 रुपए, शिव कुमार 20 रुपए, संतोष साहू नवागढ़ भानापाड़ा की तरफ से 50 रुपए से लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ 50 रुपए राम जी साहू की तरफ से। मंगलदीप मानस परिवार के कोई भी सदस्य आकर के यहाँ अपना पुरस्कार की राशि ले जाने को करेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय।
हाँ मंगल और पुरस्कार मिला था, पैसा चला गया है। नाम बोलने बाकी था। मुदिका ने प्रसाद साहू गजरी वाली तरफ से 50 रुपए उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी नहीं है। श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम। रेडी जय श्री राम। रामी मानस दरबार और एक मेरा जजपुर जिला शक्ति से आप सभी का स्वागत करती है। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी राम भक्त हैं, हमारे सम्मानीय श्री नारायण जी, श्री व्यास महाराज जी, आप सभी को मेरे पार्टी को स्वागत चरण छूकर प्रणाम है। तो आइए सर्वप्रथम मुख्य प्यारे के भजन मैं चाहूंगी एक बार आप सभी राम भक्त बोलो जय जय बोले
राम नाम राम जिनके सर्वमंगल नाम है, प्रभु सर्वेश को श्रद्धा सहित प्रणाम। श्याम रामचंद्र की जय। मानव श्रोताजन, भक्तिमती मातागण, आज के रामायण के पावन दिवस के उत्तर का मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस लौटने के बाद में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है तथा वहीं से एक बार वशिष्ठ मुनि आए। ये एक बार शब्द है, ये सब कुछ मानस में 18 बार प्रयोग हुए। एक समय के बाद में वशिष्ठ मुनि जी राम जी के पास गए। अब राम सुनाओ मुनि कहकर जोड़ी। वशिष्ठ मुनि जी दोनों हाथ जोड़ के विनम्र भाव से अपन शिष्य के प्रणाम करते हुए थे, प्रभु आप कृपा के सागर, दया के निधान, और मैं आपसे विनती करता हूं, देखी आचरण तुम्हारा। हे राम जी, तुम आचरण, तुम व्यवहार, तुम स्वभाव देख के मन में मोह उत्पन्न हो गई और थोक नहीं अपार उत्पन्न हो गई। ऐसे प्रकार के भगवान राम जी का वशिष्ठ मुनि जी के श्याम रामचंद्र की जय। तो शांति के बाद उठ के छोटी सी नजर में चाहूंगा एक बार बोलो जय जय श्री राम। माया
महिमायक वेद नहीं जाना, मैं किस भांति कहूं। वेद पुराण स्मृति श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुवर वशिष्ठ मुनि जी चरित्र और आपके आचरण ये सब के समझ से परे, ये कोई सीमा में नहीं बंधे। हे प्रभु मैं कहीं भांति कहे भगवान, हे भगवान हे दया के सागर, हे राम जी आपकी कृपा और दया भी अद्वितीय, जेरा समझ पाना बड़ा कठिन है। और ये उपरोहित के काम है, पांडिताई के काम है, ये हर सबसे गंदा काम है, नीच काम है। जेरा 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र सब बखान करते, वेद पुराण सुस्मृति कर निंदा, एक निंदा करते। ऐसे प्रकार के वशिष्ठ मुनि जी प्रभु रामचंद्र जी ने कही लखन श्याम चंद्र की जय। तो आइए राम जी के दरबार में उनके प्यारे से भजन।
श्याम रामचंद्र की जय। मैं राजा दशरथ के घर में पिता की कामना में और चुप नहीं सकते रहे। तब ब्रह्मा जी को स्वयं कह रही थी, हे वत्स, हे पुत्र, ते जाकर मेरे वंश मणि भगवान रामचंद्र जी के कुल के पुरोहिती काम करना स्वीकार कर ले, जीवा आगे चल के तो बहुत लाभ प्राप्त हो। खबर भगवान राम जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद भगवान स्वयं अवतार लेके दशरथ के घर में वही रघुकुल भूषण भूपा कुल के भूषण रघुवंश मणि रामचंद्र जी राजा के रूप में अवतरित हुई। ऐसे प्रकार के ब्रह्मा जी बोला कह रही से इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि जी निवेदन करते हैं, श्याम रामचंद्र की जय। सब मैं हृदय विचारा जो जा कहूँ करे सो पे हूँ धर्म नहीं समया। श्याम रामचंद्र की जय। ब्रह्मा भगवान बोला कह रही से, हे वत्स, हे पुत्र, पहले जा राजा दशरथ के घर में पुरोहिती काम पंडिताई काम कर ले। ये बात मैं मन में सोच करके विचार करके जाने योग करना, जप करना, तप करना, दान करना, ये सबसे बढ़ करके भगवान राम की जो सानिध्य वाला मिल गई, एक से बड़े बड़ा हित के बात का हो सकी। जा कहूँ करे सो पई है, हे पुत्र जा और सुंदर भगवान की चरित्र दिखे के मौका मिली। एक से बड़े धर्म दूसरा को संसार में नहीं। यह धर्म पालन करते हुए भगवान रामचंद्र जी के
आचरण के बारे में जान दे, चरित्र के बारे में जान दे, तब तो ज्ञान हो जाएगी। वो सब सीधा का परमेश्वर भगवान राम जी स्वयं अवतार लेके दशरथ के घर में आए। राम शब्द ढाई अक्षर से बने हैं, ढाई अक्षर से प्रेम भी बने हैं, और प्रेम की ही भूखे वशिष्ठ मुनि की है। प्रेम से भक्ति मिलते ढाई अक्षर के, ज्ञान ढाई अक्षर के, व्रत ढाई अक्षर से, विद्या ढाई अक्षर के, मोक्ष, धर्म, कर्म, स्वर्ग, ये सब ढाई अक्षर से बने का भगवान रामचंद्र के नाम भी ढाई अक्षर से बने हैं। ऐसे पावन चरित्र वशिष्ठ मुनि की भगवान चंद्र रामचंद्र के निहारक है। श्याम रामचंद्र की जय। तो आइए राम जी के दरबार बहुत प्यारा है भजन। भक्ति में तेरी जान है और जान तेरी महिमा संसार जाने। तूने दिया है इस भक्ति को, ज्ञानी को ज्ञान दिया है। धरती चले हो अंबर चले हो, धरती चले अंबर चले, इतना हमारी तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हर युग मेरे हो। तुमको राम धड़कन बोली दिल तुम्हारा, कोई भक्त रामचंद्र की
बोली भर मेरा जग तक नियम जोग निज धर्मा कृति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मंजर जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन श्याम रामचंद्र की जय। महादेव जी की पार्वती योग है, तप है, नियम है, ये सब अपन धर्म के अनुसार करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में 4 वर्ण हैं, 4 धर्म हैं और चारों वर्ण के अलग अलग कर्तव्य हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये चारों के अलग अलग धर्म भी है, अलग अलग कर्तव्य भी है। सब अपने कर्तव्य के अनुसार धर्म के पालन करना चाहिए। ज्ञान दया दम तीरथ मंदिर, ज्ञान है, दया है और दम है, ये सब तीर्थ है, तीर्थ के समान है। जहां अपने मन लोग गए मन धर्म में चलते हुए, धर्म के रास्ते में अग्रसर होते हुए अपन श्रुति के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार, नित्य संकल्प के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे प्रकार के आप सुखी पुच्छिरात कर लगे हैं। श्याम रामचंद्र की जय। तो बहुत प्यारा छत्तीसगढ़ भजन अच्छा है। एक बार जोरदार जयकार लगाएं, बोलो जय जय मोरे राम आयो भक्त जानो जी आदि दीन जानो जी मेरा लगाओ जी मोरे राम प्रभु श्री राम तो क्या कहते हैं
प्रभु श्री रामचंद्र को लाना है ना तो क्या करने दीदी मोरे आगमन गम पुराण अनेका पढ़े सुने पर प्रभु एका सब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल यह सुंदर श्याम रामचंद्र की जय। जो हमारा धरोहर है वेद पुराण एवं अपना शास्त्र संगत के बाद बताते हैं कि जीवन में प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिए केवल एक ईश्वर के भजन ही सहाय है। प्रभु की भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। पढ़े सुने अरे पढ़ प्रभु एका एवं पढ़े मां वेद पुराण सुने मां केवल हमारा एक ही प्राप्ति पूर्ण होती है, वो का है ईश्वर की भक्ति। भगवान के चरणारविंद में अपन सच्ची श्रद्धा से सच्ची निष्ठा से अगर हम प्रेम करबो तो प्रेम की प्रतिभा काबिल ही भगवान ने जब याद करबो तो उल्टा को वह पर दया करे। तब प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन का फल यह सुंदर। प्रभु के चरणारविंद में होकर कमल स्वरूप पांव में उधर चरण में अगर नतमस्तक होते हुए हम अपना जीवन में समर्पण कर देवो तब सब साधन के फल प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे प्रकार के महादेव पार्वती के पास आते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। अभी मंचस्थ रामनी मानस मंडली कोड़े की राज्य भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत सुंदर ढंग से गाकर सभी को आनंदित किए। अभी कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर श्वेता मानस मंडली की कीर्ता, इनके स्थान पर श्वेता मानस मंडली की कीर्ता आप मंचस्थ होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को आगे बढ़ाएं और आगामी के लिए परमेश्वरी मानस मंडली कोटेरा बालो आगामी के लिए परमेश्वरी मानस मंडली कोटेरा बालो आप अपनी पार्टी से ही नवधा पंडाल के सभी पहुंचने की कृपा करेंगे और इसके आगामी खगेश मानस मंडली भारद्वाज सबकी तैयार रहेंगे। इसके आगामी महादेव मानस परिवार सरहर तैयार रहेंगे। उसके आगामी श्री बालाजी मानस मंडली कठी की अपने पार्टी को सजा बनाकर रखेंगे। वह तमाम कार्यक्रम पिंकी साहू संस्कार साहू इनकी ओर से 50 रुपए, लक्ष्मी नारायण गुरु जी शिवर और भागीरथी इनकी ओर से 50 रुपए, दुलारी साहू मिस्त्री कामनी इनकी तरफ से 20 रुपए, कोमल सुंदर सभी हिंदू वाले की तरफ से 20 रुपए, भागवत फोटोग्राफी की तरफ से 20 रुपए, रेत मार्ग ट्रांसपोर्ट की तरफ से 20 रुपए, यश साहू इंडियन हेलमेट ट्रक ड्राइवर की तरफ से 51 रुपए, शर्दी किरीट भाई साहू के सपोर्टर सोनी हिमांश गौतम इनकी तरफ से 50 रुपए, हिमांशु की तरफ से 50 रुपए, राकेश कुमार साहू की तरफ से 50 रुपए, अजय की पुत्री मानसी और तामसी की तरफ से 50 रुपए, सतीश कुमार साहू टैक्स मिस्त्री की तरफ से 50 रुपए, दिनेश कुमार साहू टैक्स मिस्त्री की तरफ से 50 रुपए, सीताबाई साहू धनभाई साहू की तरफ से 100 रुपए, जुगन साहू पोली राजा की तरफ से 20 रुपए, आरवन वाले को सरपंच के सुपुत्र लक्ष्य एवं दीवान की तरफ से 150 रुपए के सप्रे में,
सुनील यादव तरफ से 50 रुपए, राजेश साहू एवं पुत्र विहान साहू की तरफ से 50 रुपए, प्रिंसी अंशु एवं अंशिका की तरफ से 20 रुपए, मनीष साहू, भुवन साहू, सत्य आदित्य नवागढ़ इनके तरफ से पैसा दिखाने हैं। उमेश शैलेंद्र विशाल छत्रपाल की तरफ से 50 रुपए, तेरह साहू किराना स्टोर भोला साहू की तरफ से 50 रुपए, मुद्रिका देव प्रसाद साहू बचरी उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिलाईगढ़ की तरफ से 50 रुपए, शिव कुमार की तरफ से 20 रुपए, आर्य साहू की तरफ से 50 रुपए, सागर साहू फाटापारा की तरफ से 200 रुपए, रेत माफिया सोनू यादव ट्रांसपोर्टिंग कागोडिया की तरफ से 50 रुपए, अमन शाही की तरफ से 50 रुपए, प्रहलाद साहू की तरफ से 20 रुपए और चुड़ैल की तरफ से 10 रुपए, गजरी की तरफ से 10 रुपए, बलदेव साहू गदवा इनकी तरफ से 50 रुपए, भानु फोटोग्राफर की तरफ से 50 रुपए, रति राम साहू की तरफ से 20 रुपए, अशोक साहू पानगढ़ की तरफ से 20 रुपए, दिलेश्वर प्रसाद कश्यप शिक्षक नवागढ़ की तरफ से 50 रुपए, शिवसागर यादव की तरफ से 50 रुपए से सम्मानित किया गया है। रागनी मानस मंडली के कोई भी सदस्य यहाँ आकर के अपना पुरस्कार की राशि लेने कर रहे हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज है। अभी वर्तमान पार्टी श्वेता मानस मंडली की गिरदा का था, तो धोखावश परमेश्वरी मानस मंडली मंच पर उपस्थित है, इनके बाद इनका था। तो आगामी पार्टी के लिए श्वेता मानस मंडली की गिरदा तैयार रहेंगे। आगामी के लिए श्वेता मानस मंडली की गिरदा तैयार रहेंगे। उसके आगामी खगेश मानस मंडली भारद्वाज शक्ति, उसके आगामी महादेव मानस परिवार सरहर, उसके आगामी श्री बालाजी मानस मंडली कटिकी की गिरदा अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। हाँ, पुरस्कार राशि रागनी मानस मंडली ओडेगेरा। आप कोई भी सदस्य आकर के अपना पुरस्कार की राशि में जाने की कृपा करेंगे। लखन से रामचंद्र की जय।
जरा सा हो चालू करना दे गाना बोल के चालू है क्या करना ना जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे हाँ, वर्तमान का समय 1:16 से प्रारंभ हो रहा है। रहन से रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। एक बार समस्त सोका समाज पिता के बुजुर्ग महिला और समस्त निर्णायक बंधु और यहाँ के छोटे छोटे बालक गोपाल आप सभी के श्री चरण कमल में जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार राम कुटीरा जिला बालक छत्तीसगढ़ के दहलने आप सभी के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करो। भगवान श्री रामचंद्र जी की अपनी कथा से जुड़े करके माता रानी के भजन करबो ई भाव के साथ कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आते हैं माँ के द्वारे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। बोल श्री रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु
कथा प्रसंग रही राम जी मानस के शब्द मुस्कान कर पाना जहाँ पर जब दादा दूसरा बड़ा सदा है अब सुंदर से लेकर बड़े कही कि आपका मनिका मकुरान अनेका पढ़े सुने कर खर्च न होगा तब पद पंकज प्रीति निरंतर श्रम साधन करिए फल सुंदर सत्य समान आज वशिष्ठ स्थिति भगवान राम जी के पास कहा है और हाथ जोड़िए वशिष्ठ ऋषि अनेक प्रकार की जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का ज्ञान नियम के बाद जो है पूछा कि भगवान रामचंद्र सरकार जी बता पाते और वशिष्ठ मुनि भगवान रामचंद्र कहे कि हे प्रभु आपम निगम पुराण अनेका कहे कि अनेक तंत्र वेद पुराण पढ़े और सुने की सर्वोत्तम एक फल है ऐसे की चाहे आप जो भी पढ़ लो वेद पुराण बड़े बड़े शास्त्र कोई भी तंत्र कर लो यंत्र कर लो सब साधन के एक ही फल है और कि प्रभु सब फल केवल आपके जो चरण कमल है ना वो चरण कमल के प्रेम निधे मतलब जो भी साधन कर रहे भगवान होकर के एक ही फल तो कहा कि आपके चरण कमल में प्रेम होना ऐसे जो है गुरु वशिष्ठ जी भगवान राघवेंद्र सरकार जी का कहा थी बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। Lord,
सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहे कि छूट गई मन के बलत में धोए, प्रीत के पाँव कोई बलि और प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंदर बल हम न जाए। संत समाज वहां जो है गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहे कि हे प्रभु का मैंने से मैल धोए से मैल छूटते कहा और जल के मथे से का ही निकल पाते का। तो हे प्रभु ठीक हुई प्रकार में कि भक्ति प्रेम जल बिनु रघुराई, कहे कि भक्ति जो है बिना जल, भक्ति जो है बिना प्रेम रूपी जल के अकारण वो मिलने वाला नहीं है। और वास्तविक गोस्वामी जी कहते कि ये जो प्रेम के बिना भक्ति जो है मिलने वाला नहीं है। जब तक ये जो हमारे हृदय है, ये हृदय में ये मतत्ता हरण है, भक्ति रूपी निर्मल जल नहीं पड़ती, तब तक हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो मैल है वो मैल छूटने वाला नहीं है। जैसे आज वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा थे, बोले रतन श्री रामचंद्र की जय।
अब समाज गोस्वामी जी कहे कि सोई सर्वज्ञ तत्व सोई पंडित सोई की नगरी विज्ञान अखंड दस सकल लक्षण जन सोई जाके पद सरोज रति कोई। वशिष्ठ जी महाराज आज भगवान राम जी सरकार दे लगे कि हे प्रभु वही सर्वज्ञ है और वही सार तत्व है और वही जो है महापंडित है और वही गुरु के भंडार है और वही जो है अखंड विज्ञानवान है और वही चतुर व्यक्ति है और वही जो है सब सुलक्षण से युक्त और पूर्ण। तो कहे कि प्रभु जाके बद सरोज रते कोई जेकर कि जेकर मन आपके चरण कमल के प्रेम रखे जेकर मन हमेशा आपके चरण कमल में प्रेम रखे वही सब आए भगवान। ऐसे जो है गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम जी का कहा थे बोले श्यावर रामचंद्र की जय। Thank you.
बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तो अवन गोस्वामी जी कहे कि नाथ एक वन मांगहु राम कृपा कर देव, जनक जनक प्रभु राम पद कमल कबो घटे जन नेव। आज वशिष्ठ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी लगे थे कि हे प्रभु, मैं हाथ जोड़ के आपसे केवल एक वर मांगा था, आप बोला कृपा करके देखो। और का तो कहे जन्म जन्म राम पद कबहु घटे चलिए हो। जन्म 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 जन्मांतर तक बोला आपके चरण कमल में मोर प्रेम लगे रहे, कबू ना घटे। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल वो पद प्राप्त करना चाहते हैं। चरण कमल भरत जी महाराज पाना चाहिए, एक चरण कमल भगवान भोलेनाथ जी पाना चाहिए कि बार बार वर मांगो नरस देव श्री राम पद सरोज पावनी भक्ति सदा भरत जी महाराज के भी अर्थ न धर्म न काम न गति न चबोले निवान, जन्म जन्म प्रभु राम पद यह वरदान न आन। तो ये प्रकार ने आज वही चरण कमल में गुरु वशिष्ठ जी अपन जो मन है वो मन ला जन्म जन्मांतर तक लगे रहे। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा थे, बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी मंच पर परमेश्वरी मानस मंडली को तेरा बालो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को गाकर सभी को आनंदित किए। अब ये कथा श्रवण करेंगे
इनके स्थान पर श्वेता मानस मंडली की गिरदा आप अपनी पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान के सूत्र कथा को आगे बढ़ाएंगे और आगामी के लिए खगेश मानस मंडली 12 द्वार शक्ति आगामी के लिए खगेश मानस मंडली 12 द्वार शक्ति आप अपनी पार्टी से मंच के समीप पहुंचे। उसके आगामी महादेव मानस परिवार सरहर आप अपनी पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी श्री बालाजी मानस मंडली कटही की गिरदा आप अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। वर्तमान पार्टी को दुलारी साहू मिस्त्री कामनी कनीस इनकी तरफ से 20 रुपए, कोमल सुजल समीप पेंडी वाले तरफ से 20 रुपए, लक्ष्मी नारायण गुरुजी शिव और भागीरथी साहू सड़क पारा के द्वारा 50 रुपए, पिंकी साहू संस्कार साहू इनके द्वारा 50 रुपए, मुद्रिका देव प्रसाद पचरी उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विलयगढ़ की ओर से 50 रुपए, उमेश शैलेंद्र विशाल छत्रपाल चारों भाई की तरफ से 50 रुपए, 13 साहू किराना स्टोर 50 रुपए, श्री जगत राम साहू की तरफ से 20 रुपए, विजय की पुत्री मानसी कांसी तरफ से 50 रुपए, रेत माफिया राहुल के भाई रुपेश द्वारा 50 रुपए, शिव कुमार 20 रुपए, रतराम साहू 10 रुपए, धनेश्वर साहू 20 रुपए, लोकपाल नीटू 50 रुपए, मूलचंद साहू बोधना 100 रुपए एवं जीत कुमार की तरफ से 50 रुपए सम्मानित किया गया। मैं परमेश्वरी मानस मंडली से निवेदन करूंगा कि कोई भी एक सदस्य आकर अपना इनाम की राशि ले जाने पूरा करेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। और सुख सागर यादव की तरफ से 50 रुपये से सम्मानित किया गया। बोल श्री रामचंद्र की जय। समस्त ग्रामवासी हमारे ठकुरी और जीवन कह सकता था कि हम 9 दिन तक रहे अखंड धर्माला कराए हम और दुश्मन कहा रहा हर साल के भांति हर साल नौधा करावो के तो सब लोग निवेदन हवा है आज रात भर तो आज काटी अभी सुने खामा बनी 9 दिन तक सुने हम अधूरा आज वही पूरा। यही प्रकार से निवेदन हमारे सबसे बड़ा प्रेम पूर्वक आज कथा बढ़े चला थे हमारे बीच में आप ही के पहले के उनको हम चयन कर रहे हैं कि पार्टी में आए हवा सब अपना कथा भैया हमके बीच में पवन करा हवा और दीदी बहन भाई में से सबसे निवेदन हवा है कि बढ़िया प्रकार से कथा ला पावन करा और आज के जगह काल दिन में सुनता को रातों के सुनता
हाँ ये ज्यादा अच्छा है। हो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राजा श्री राजा श्री हरि श्री राजा हरि श्री राजा श्री राजा श्री हरि राधा राधा श्री राजा श्री राजा श्री हरि राधा राधा श्री हरि राधा 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 श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम वर्तमान पार्टी का समय प्रारंभ हो रहा है 2 बजों से। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय बोलिए मन कल्याण रामचंद्र की जय बोलिए सावरे सरकार की जय
जथारी सुधारण आप सभी स्वेच्छा मानस मंडली ग्राम संगीता सत्य की ओर से सत्संगमन प्रणाम और जोहार संवर्ग आवा आप सभी जगह से प्रभु जी श्री राम के ध्यान ध्यान और मैं चाहूँगा बार जोड़कर हाथ ऊपर है नहीं ताकि प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की प्रेम से बोलो भगवती रामचंद्र की Oh
असुकही मुनीवर शिष्ट गृह आए कृपा से धोके मन अति भगवान ने हर 14 वर्ष के वन काट करके आज वध करने के बाद में आज अयोध्या नगरी के राजा बने। परमात्मा रामचंद्र जी ने राजा पाकर के समस्त अयोध्या वासी बड़ा ही प्रसन्न थे और अस कहीं मुनि वशिष्ठ गृह आए। परमात्मा रामचंद्र जी के आज भक्ति और महिमा के गुणगान करते हुए मुनि वशिष्ठ जी महाराज ने आज परमात्मा से विदा लेकर और आपके और कृपा से होंगे मना के भाई परमात्मा रामचंद्र जी के आज मुनि रामजी महाराज ने बताया पावन माता के परमात्मा रामचंद्र जी हनुमान साथ अपन भाई भरत जी महाराज का संग लेकर के अति कोमल भाव से आज जब बाहर आगे तो परमात्मा रामचंद्र जी है अपन भाई भरत सुंदर प्रकार से आज साथ में लेकर के ऐसे सुंदर कथा बताया जी महाराज के बहुत से आपका रामचंद्र की प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। हम जय हो जय हो तो बने रहे दोनों करके प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की प्रेम से बोल रामचंद्र की। अब प्यारा सा बजरंगबली महाराज के भजन और मैं चाहूँ आप सबको मेरी तारीफ से भजन गाएंगे। प्रेम से बोल बजरंगबली महाराज की और कहना है जो भी दिल से पुकारे तुझको उसकी विपदा पर मैं डरी जय जय बजरंगबली। अब बिजुली गाली का साथ
प्रेम से बोल बजरंगबली महाराज की जय। प्रेम से बोल सेनापति रामचंद्र की जय। उन्हीं कृपाल पुरमाए गए गजरत तुरंग मांगवत भय। तेरी कृपा करी सकल सराय। देव चित्र देव ते जाए। आज परमात्मा रामचंद्र जी भगवान ने बड़ा ही प्रसन्न होकर के उन्हीं कृपाल पर बांध लगे। अपन भाई भरत के साथ हनुमान जी ले लेकर के अपन महल से निकल गए और महल से निकल करके परमात्मा रामचंद्र जी ने गजरत तुरंग महावत है अनेक प्रकार के हाथी घोड़े रतला मंगा करके परमात्मा रामचंद्र जी ने देवी कृपा करी सकल सराहे और देवी जित जित कही जाए। परमात्मा रामचंद्र जी है जिकर ऊपर कृपा होते बोला अनेक प्रकार का हमारी वस्तु का दान करते हाथी घोड़ा रथ बोला तिला चाहता बोला आज दान करे आगे ऐसे सुंदर का धन बसाई जी महाराज ने और से आपके रामचंद्र की प्रेम से बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल अवधपति राजा रामचंद्र की जय। यदि ध्यान दे रहे हैं भजन मान जाते हैं गावर की आप और हम सभी प्रभु श्री राम के दरबार में है नहीं तो अब इसी में सारी गाना भजन सुनते ला 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 मोर भक्ति के सुने राम का मोर भक्ति के सुने राम का तोर नाम माटी काया छोड़ देना मोह माया सब लाए रागंपा हाय सब लाए जाना गंगा तभी को गंगा जाना है जी सभी जाना है जाना है कि नहीं जाना है तो अब आप इसमें सारे से वचन कह रहे हैं
प्रेम से बोल श्री रामचंद्र की प्रेम से बोला बलपति रामचंद्र की हर सन सकल सब कहो श्रम पाए गए जहाँ शीतल आए भरत दीन निज बसन डराए बैठे प्रभु से वही सब भाई। आज परमात्मा रामचंद्र जी भगवान की महिमा बढ़ाइएगा आपको। परमात्मा रामचंद्र जी है आज सबों के ऊपर अपन दया दृष्टि बनाकर के सबके ऊपर अपन कृपा बरसाते और परमात्मा रामचंद्र जी है अपन चारों भाई के साथ आज बड़ा ही प्रसन्न है। हर सकल श्रम प्रभु श्रम पाई और गए जहाँ शीतल और परमात्मा रामचंद्र जी है आज अति मन मोहने वाला बगीचा में जाकर के अपन भाई के साथ वहाँ जब पहुंचे तो भरत जी महाराज ने बगीचा में एक जगह अपन दक्षिण दिशा करके परमात्मा रामचंद्र जी बिठाते और तीनों भाई मिलकर के परमात्मा रामचंद्र जी भगवान के पास सुंदर पैर लगाए लगा के ऐसे सुंदर परमात्मा रामचंद्र जी की महिमा और वो सारे जी महाराज ने लेकर के सुना है बोल से आपके रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल भगवती राजा रामचंद्र की जय। भक्ति के बांध डोरे मन मन जगाए जो तेरा मन मन जगाए जो तेरा। भक्ति के बांध डोरे सखी मन माजा गारे ज्योतिना मन माजा गारे ज्योतिना मन माजा गारे ज्योतिना
प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की माटी सहिता तोरे माटी में चाहिना जब हरी चोरा कर जाएगा जाने कर जाने कर जिंदगी चल दुनिया में माया के बाजार
परमात्मा रामचंद्र जी का सुंदर प्रणाम करके देख से कथा को सारी महाराज
बोल श्यामती रामचंद्र की जय। लहर से रामचंद्र की जय। अभी मंच श्वेता मानस मंडली की गिरदा भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत सुंदर ढंग से गाना सभी को आनंदित किए। अभी कथा श्रवण करें। इनके स्थान पर खगेश मानस मंडली भारद्वाज शक्ति आप अपने पार्टी से मध्यस्थ होकर भगवान की महिमा को आगे बढ़ाए और आगामी पाली के लिए महादेव मानस परिवार सरहद आगामी पाली के लिए महादेव मानस परिवार सरहद आप अपनी पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी श्री बालाजी मानस मंडली कटेरी की गिरदा आप अपनी पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी प्रिया मानस मंडली करतला अपनी पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी खुशी रजक मानस मंडली सुबह तराई कोरबा आप अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। वर्तमान पार्टी को विशाल साहू, शैलेंद्र साहू, उमेश साहू, चंद्रपाल साहू चारों की तरफ से 50 रुपए। रेत माफिया एंड ट्रांसपोर्ट शोभू यादव जी एंड महेंद्र पाल एंड जितेंद्र साहू जी के द्वारा 51 रुपए। शुभम डीजे एवं टेंट हाउस धरती की तरफ से 30 रुपए। मुद्रिका देव प्रसाद साहू कचरी उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विलयगढ़ की तरफ से 50 रुपए। रथराम साहू की तरफ से 10 रुपए। शैलेंद्र नौगढ़ की तरफ से 20 रुपए। जीत राम की तरफ से 50 रुपए। अजय की पुत्री मानसी एवं कांसी की तरफ से 50 रुपए। शिव कुमार की तरफ से 50 रुपए। पिंकी साहू, संस्कार साहू इनकी तरफ से 50 रुपए। लक्ष्मी नारायण गुरु जी शिव और भागीरथी साहू सड़क पर के द्वारा 50 रुपए। दुलारी साहू मिस्त्री कामनी कनीस उनकी तरफ से 20 रुपए। कोमल सुजल सभी पेंड्री वाले की तरफ से 20 रुपए से सम्मानित किया गया और सुख सागर यादव की तरफ से 50 रुपए से सम्मानित किया गया। श्वेता मानस मंडली कि कोई भी एक सदस्य आकर के अपना पुरस्कार की राशि ले जाने की कृपा करेंगे। लखन से रामचंद्र की जय।
लगन से रामचंद्र की जय। वर्तमान पार्टी का समय 2:40 से प्रारंभ हो रहा है। बोली श्याम रामचंद्र की जय। रहो मानस पार्टी के से आप सभी हार्दिक अभिनंदन और से आपका एक बार हम दीदी बहनी भैया से हमारी सर्विस के लिए प्रोग्राम में आपसे जोड़ा जाता है। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सूर्यज्योति समगम सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आप सब इसमें बहुत प्यारा सोना चांदी बस एक बार दर्शन दे दो हो जाओ। एक प्रोग्राम करते ला 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 la
सोनानी मांगो मैं चांदी नहीं मांगो मैं सोनानी मांगो मैं चांदी नहीं मांगो मैं पावा तोरे लगे सजना मैं आलू पावा तोरे लगे सजना मैं आलू पावा तोरे विधीना सुतले मोरे अरीना सुतले मोरे विधीना सुतले मोरे अरीना सुतले मोरे पावा तोरे सतना मैं आलू पावा तोरे सतना मैं आलू विधीना सुतले मोरे अरीना सुतले मोरे विधीना सुतले मोरे अरीना सुतले मोरे पावा तोरे लगे सजना मैं आलू पावा तोरे लगे सजना मैं आलू पावा तोरे विधीना सुतले मोरे अरीना सुतले मोरे विधीना सुतले मोरे अरीना सुतले मोरे पावा तोरे लगे सजना मैं आलू पावा तोरे लगे सजना मैं आलू पावा तोरे बोली श्याम रामचंद्र की जय हो रामचंद्र की जय ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरिया रामचंद्र की जय श्री रामचरितमानस के स्नान करेगा जति बैठे श्रोता समाजला अमन गति ने दोनों हाथ जोड़ के नमन है। इस समय काल की महारानी गरुड़ लगी थे ममन होतन पंकज है रोतन रामा हो जय रामा जय कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी आज जे नाराज है जे अवसर पाकर के वो समय पहुंचे हमें और वो समय जे शोक के छुड़ाने वाला दुख दर्द हटाने वाला हे कमल नयन माने तोर जे कृपा दृष्टि है सदा मोर ऊपर लगे रहे हे हरि तोर नील कमल के समान जे स्वर्ण समान शरीर जे कामदेव के समान जेना शंकर भगवान सदा अपन हृदय माने धारण करके एक कथा का भवानी का सुनात रहे जे हे प्रभु आज मोर हृदय में सदा बसे रहा यही प्रकार के काकी महारानी कथा के माध्यम से सुनाते चलिए बीते चौपाई में बोलो माता गंगा की जय हो। बोली श्याम मेरे रामचंद्र की जय हो। प्रभु आगे लगा बेड़ा
बोली जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब झूमले वो नाचे बोली का वो नाचे गाना। सब झूमले वो नाचे बोली का वो नाचे गाना। बोली श्याम रामचंद्र की जय हो। सुदर्शन पुराण विदितन जनागन भगवान राम के यश पुराण है, वेद है, एक शास्त्र है, माने उनका गुण लगाकर प्रकट हो गए। देवता है, मुनि है, सब है, लेकर समुदाय है, जीवन ध्रुव के बीच भगवान की गुण हमें जिन प्रकार के जीवन के नाश करो या ध्रुव के नाश करना ये जब राम ये कुशल पूर्वक माने अवधमा महाराजा बन के तैयार हैं, ये भूषण बने हमें, गहना बने हमें, यही प्रकार के काल में महाराज के रूप लेकर सुना हमें। बहुत श्री रामचंद्र की जय हो। बोली श्याम रामचंद्र की जय हो। मोरे राम सबके बोली केवट नैयाली सब सबके छैयाली कोई राम बोली श्याम रामचंद्र की जय हो।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कहते भगवान तू गरीब के पाप के नाश करने वाला, तू हर कोई को ममता देने वाला, प्यार देने वाला, कि हे तुलसीदास लखन से रामचंद्र की जय। तो थारी को छोड़ देने को स्वागत। अभी मानस मंच पर उपस्थित खगेश मानस मंडली भारद्वाज शक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत सुंदर गाकर हम सभी को खिताब किए। अभी कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर महादेव मानस परिवार सरहर आप अपने पार्टी से मंत्र होकर भगवान की अमृत में कथा को आगे बढ़ाएंगे। और आगामी के लिए बालाजी मानस मंडली कटही की गिरदा, आगामी के लिए श्री बालाजी मानस मंडली कटही की गिरदा आप अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी प्रिया मानस मंडली करतला तैयार रहेंगे। उसके आगामी खुशी रजत मानस मंडली सुबह तैयार रहेंगे। उसके आगामी विश्वनाथ मानस मंडली जरवे। ये सभी पार्टियां जो है तैयार होकर के सजग रहेंगे। वर्तमान पार्टी को पिंकी साहू संस्कार साहू की ओर से 50 रुपए, लक्ष्मी नारायण गुरु जी शिव और भागीरथी साहू सड़क पारा की ओर से 50 रुपए, दुलारी साहू मिस्त्री कामनी गणेश इनकी तरफ से 20 रुपए, कोमाल सुजल समीर पेंटी वाले की तरफ से 20 रुपए, टीकाराम नवापारा की ओर से 20 रुपए, मुद्रिका देव प्रसाद साहू उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिलाई गाड़ी की तरफ से 50 रुपए, रथराम 10 रुपए, शिव कुमार 50 रुपए, अंशु हिमांशु 20 रुपए, गंगाधर बृहस्पति 20 रुपए, लक्ष्मी साहू 10 रुपए, महेश्वर साहू 20 रुपए एवं सुखसागर यादव की तरफ से 50 रुपए से सम्मानित किया गया। लखन से रामचंद्र की जय।
महादेव मानस परिवार सरहद आप शीघ्र ही मानस मंडल पहुंचकर भगवान के अमृत में कथा भाग्य बनाए। इसके आगामी श्री बालाजी मानस मंडली कटगी की गिरा अपने पार्टी से तैयार रहे। प्रिया मानस मंडली करताला कोई भी अपने पार्टी से सजग रहेंगे। इसके आगामी खुशी रजत मानस मंडली सुपत्र है, आप भी अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। इसके आगामी विश्वनाथ मानस मंडली जय, आप अपने पार्टी से सजग रहेंगे। हेलो सरहद मानस मंडल सरहद जहाँ कहीं हो अति शीघ्र मानस मंडल पहुंचने का कष्ट करें। हाँ कहा रहस्य रामचंद्र की जय। महादेव मानस मंडली सरहद अति शीघ्र मंच पर पहुंचे। महादेव मानस परिवार सरहद महादेव मानस परिवार सरहद, उसके आगामी बालाजी मानस मंडली कटही की क्रीड़ा। हाँ, महादेव मानस परिवार सरहद के अनुपस्थिति में मैं श्री बालाजी मानस मंडली कटही की क्रीड़ा को साधारण मंच पर पहुंचे, भगवान की कथा को आगे बढ़ाए। आगामी के लिए प्रिया मानस मंडली करतला तैयार रहेंगे। उसके आगामी मानस मंडली सुपत्र कोरबा तैयार रहेंगे। उसके आगामी विश्वनाथ मानस मंडली जरवे तैयार रहेंगे। उसके आगामी सुरेखा मानस मंडली शिवरी नारायण तैयार रहेंगे। उसके आगामी ज्योति मानस मंडली गोधना तैयार रहेंगे। उसके आगामी जीवन ज्योति मानस परिवार सेंद्रस सरसिवा अपने पार्टी को सजग बनाकर रखेंगे। लगन से रामचंद्र की जय। कृपया शांति बनाकर रखें, ये गम्मत नहीं है। शांति बनाकर रहे।
लड़ाई हो यार तुम्हारे गाँव के उधर से काल ना देने में लड़ाई होती बहुत चालू है मजा बेकार कर बता दो हाँ लाइव चलाते भाई सब एक मेरी गाड़ी वाला हाँ एम सब मोबाइल में भाई रिकॉर्डिंग होते हेलो चलिए शांति बनाकर बैठे। अरे क्या बदल भी सोची थी हाँ हाँ और हाँ हाँ वही तो बिना वजह इसमें इसको बोल श्याम रामचंद्र की जय। शांति बनाए रखें। बाहर से हमारे बीच में पार्टी बहुत आया हुआ है, कृपया करके सभी से निवेदन करना चाहूंगा शांति बनाकर अपने अपने स्थान में ये ग्रहण करेंगे क्योंकि समय हमको नजदीक करना है। बैठ जाएंगे सब अपने स्थान पर बने डेढ़ लाख पहुंचा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। लाला कहाँ गया? कृपया शांत बनाए रखें, अपने अपने स्थान में बैठे।
सभी से आवेदन है, निवेदन है। कृपया करके साल बैठ जाएंगे तो खड़े रहेंगे, उसके बजाय अपने घर में जाकर सोए। रामायण सुनना है तो शांति बनाकर बैठे। गम्मत नहीं हो रहा है, जिसको नहीं सुनना है वो घर में जाकर सो जाए। यहाँ सामने में कोई खड़े नहीं रहेंगे। पंडाल के नीचे बैठ जाएंगे, जितने लोग पंडाल के अंदर है वो बैठ जाएंगे, नहीं तो घर में जाकर सोएं। हाँ, वर्तमान का पार्टी का समय प्रारंभ हो रहा है 3:28 से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चंद्र की प्रणाम करते हुए आइए बुजुर्गों, इससे पहले मैं चाहूंगी एक बार श्री राम जी के नाम पर जोरदार जयकार हो जाए और कहते हैं अजीना फूल न फूल सारा फूलों की हार चाहिए, न फूल सारा फूलों की हार चाहिए। और हमें तो अब सबकी ताली की बौछार चाहिए, ताली की बौछार चाहिए। आइए
अच्छा टाइम में जल्दी तक काम करके रखा ये बॉक्स लग मेरा ध्यान रखी सब होते हैं मस्त ना हो गलत Yeah.
प्रभु की इस यश को यहाँ बड़े सुंदर सुंदर से उसकी लीला को कहते हैं कि प्रभु आपकी गुण जो है वेद शास्त्र जो है और मुनि है ऋषि है संत जो है हर हमेशा आपकी गुण की बखान करते हैं। आप इस पाप पूर्ति जो है झूठी है वह उसे वर्जन करने वाले हैं। आप एक आपकी जो प्रतिबिंब जो है आपकी जो प्रकाश का जो भूषण है और आपकी जो प्रभुता है आपकी महिमा गुण जो है ये बड़ा कुशल है जो अयोध्या के श्री विभूषण के रूप में एक प्रफुल्ल आभूषण के रूप में विराजमान है सुशोभितमान है। प्रभु जी आपकी महिमा को मैं कैसे बखान कर सकता हूँ ऐसे कोई दूसरा करते हैं वो सब रामचंद्र की Oh,
यहाँ सुनने जैसे पार्वती समस्त बोल रहे हैं कि पार्वती इस प्रभु की महिमा जो है उसकी लीला जो आज है उसे जो प्रेम करते उसके प्रति हृदय में प्रेम लगा कर जो सुनते हैं वह महासागर से बिल्कुल पार हो जाते हैं। वह इस कलियुग में पापों के खंडन करने वाले हैं और ममता को मारने वाले वह एक तुलसीदास के इस जो प्रभु है वह सबकी रक्षा करते हैं, सबकी प्रति प्रेम करने वाले हैं, सबके प्रति दया करने वाले प्रभु हैं। उसके नाम लेकर इस दुनिया से महासागर से पार होना हम लोगों को जरूरी है। यही हमारा कर्तव्य है कि हम उस प्रभु को नाम कभी नहीं भूलना चाहिए और वह प्रभु जो है सबकी हित करने वाले हैं, सबके प्रति रक्षा करने वाले हैं। ऐसे कोई दूसरा से हम वर्णन करते हैं। बहुत सारा राम की है।
वर्णन देते हैं जिस प्रकार से नारद मुनि महाराज जी है उस प्रभु की लीला की, उस प्रभु की महिमा के बखान कर रहे हैं और वो एक समुद्र की तरह उसकी महिमा जो है जिसे हृदय में नारद मुनि महाराज है प्रभु की महिमा को वास करे हुए हैं, हृदय में बसाए हुए हैं और वह नारद मुनि महाराज उस प्रभु की महिमा को अपने दिल में बसा करके अपने ब्रह्मलोक को नारद मुनि महाराज है वहां से विदा करके चल दिए। वो श्याम रामचंद्र की जय। Oh
कहते हैं कि पार्वती इस कथा को बड़ा सुंदर ध्यान लगा करके सुनिए, जिससे इस जीवन जो है सुंदर हो जाएगा। और जो प्रभु की कथा जो है मेरे बुद्धि है उस हिसाब से मैं तुम्हारे पास कह रहा हूँ कि उसकी पति जो है, जो प्रभु की चरित्र जो है वह 100 करोड़ की, जिसे अथाह अपार कहते हैं, वह कथा उससे भी ज्यादा कहूँगा तो भी कम है। और जिसे शेष शारदा जो है इसकी कथा के वर्णन करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं एक मुख वाले में क्या कर सकता हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि आप उसे ध्यान से सुन करके समझेंगे ज्यादा तभी उचित रहेगा। ऐसे करके के वो शंकर जी है कि पार्वती शब्द बोल रहे हैं, वो श्याम की Thank you.
प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्मानंद नमामि। जल से कर मेहनत रघुपति चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा जो गुण जो है वह अनंत है और उसकी गुण जो कथा जो है और अनंत है। जन्म और कर्म से उसका नाम भी अनंत है। वह कितना भी कहो, जिस प्रकार से जलों की बूंद जो है पृथ्वी में और रज जो है कण जो है इस पृथ्वी में कितना न कितना है, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की उस चरित्र को जितना भी कहो फिर भी कम है। कितना भी कहेंगे फिर भी वह हमसे बनना मुश्किल हो रहा है। वो इतना उसकी चरित्र है, उसकी लीला है, उसकी महिमा है, जिसको कहना हमसे मुश्किल हो रहा है। ऐसे कई तुलसीदास से हम करते हैं। वो श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए मंच पर उपस्थित श्री बालाजी मानस मंडली कटनी की गिरला भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत सुंदर ढंग से गाकर सुनाए। अभी कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर क्रिया मानस मंडली कटरा आप अपने पाठ हेलो क्रिया मानस मंडली करतला आप अपनी पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान के अमृत की कथा को आगे बढ़ाएं और आगामी के लिए खुशी रजत मानस मंडली सुपत्र कोरबा आगामी के लिए खुशी रजत मानस मंडली सुपत्र कोरबा आप अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी विश्वनाथ मानस मंडली जरवे आप अपनी पार्टी से तैयार रहेंगे। इसके आगामी सुलेखा मानस मंडली शिवरी नारायण तैयार रहेंगे। उसके आगामी ज्योति मानस मंडली बोलना तैयार रहेंगे। उसके आगामी जीवन ज्योति मानस परिवार से सीमा तैयार रहेंगे। वर्तमान पार्टी को रेत माफिया ट्रांसपोर्ट राहुल साहू ठाकुर द्वारा 50 रुपए
मुद्रिका ने प्रसाद साहू पचनी उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयी दल की ओर से 50 रुपए, लक्ष्मी नारायण गुरु जी सिहोर एवं भागीरथी साहू सड़क पारा इनके द्वारा 50 रुपए, दुल्हन साहू निवृत्ति ननी कबीस इनके द्वारा 20 रुपए, ओमन सुजल समीप पेंडी वाले की तरफ से 20 रुपए, पिंकी साहू संस्कार साहू इनकी तरफ से 50 रुपए, शिव कुमार साहू की तरफ से 50 रुपए, सुख सागर यादव की तरफ से 50 रुपए एवं जीत राम की तरफ से 50 रुपए से सम्मानित किया जाता है। लगन से रामचंद्र की जय।
वर्तमान पार्टी का समय प्रारंभ हो रहा है 4 मिनट से।
सुनती कहती है करोड़ों बिरजों में कोई एक शब्द व्यर्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक निजी होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीव होगा आइए
मुक्त ने सब सुखों की खान और ब्रह्मा ने विज्ञान वालों पुरुष और भी दुर्बल है धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन को इत्यादि इस प्रकार से भगवान करते हैं और
सब देशो दुर्गल श्री राम राम शोभन भक्ति कागत निभाए विश्वनाथ इनमें सभी देवी देवता महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्बल है जो मत और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी के भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ ऐसी दुर्बल हरि भक्ति को गौवा कैसे पा गया मुझे समझा कर कहिए। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व के जो वर्णन करते हैं आइए ज्ञान सकते हैं।
राम पराय राम गुणगान तिथि राम पायो कृष्ण राम पराय गुणगान तिथि हे नाम कहिए श्री रामायण ज्ञान गुणगान और वीर बुद्धि भुजंगी कौवे इस कारण भाई इस प्रकार से इस चौपाई में यहाँ पे गोस्वामी तुलसी जी आइए चरण से शुरू
यह प्रभु नाम चरित प्रभु सुहावा कहो कृपाल तुम के भाग सुना मदनारे कहाँ मोहित तो तुम्हारी यह प्रभु चरित प्रभु सुहावा कहो कृपाल ये कृपालु बताइए कौन प्रभु या पवित्र और सत्य कहाँ आया और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सीखा मुझे बड़ा ही भारी दौड़ हो रहा है इस प्रकार से वो स्वामी तुलसीदास जी से बैठ आइए ज़्यादा से सदर है
प्रभु चरित्र पवित्र स्वभाव कृपा और तुम यही आत्म सदा मुलारे काम पुकारे हे भाइयों बताइए उस कौन से प्रभु ने हमें आज सुंदर चरित्र कहाँ बताया और एक शत्रु हमें बताई गई आपने किस प्रकार से सुना मुझे बड़े ही इस प्रकार से दुश्मन को सुनाई इसे जैसे ये प्यारा शब्द नगर से रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित प्रिया मानस मंडली करतला भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत सुंदर ढंग से गाकर हम सभी को आनंदित किए। अब ये कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर खुशी रजक मानस मंडली सुभद्रा कोरवा आप अपने पार्टी से एक मंच में होकर भगवान की कथा को आगे बढ़ाएंगे और आगामी के लिए विश्वनाथ मानस मंडली जलवे आगामी के लिए विश्वनाथ मानस मंडली जलवे आप अपने पार्टी से तैयार रहें। उसकी आगामी सुरेखा मानस मंडली शिवरी नारायण तैयार रहें। उसके आगामी ज्योति मानस मंडली गोधना तैयार रहें। उसके आगामी जीवन ज्योति मानस परिवार जीवन तैयार रहें। उसके आगामी पुष्पा मानस मंडली परसदा कला शक्ति तैयार रहेंगे। वर्तमान पार्टी को शुभम डीजे एवं टेंट हाउस दर्री भड़ेसर एवं महेश्वर की तरफ से 50 रुपए, रेत माफिया एंड ट्रांसपोर्ट सोनू यादव एंड महेंद्र पाल एंड जितेंद्र इनकी ओर से 51 रुपए, रेत माफिया एंड ट्रांसपोर्ट राहुल साहू टपोदिया की ओर से 50 रुपए, पिंकी साहू संस्कार साहू इनकी तरफ से 50 रुपए, लक्ष्मण गुरु जी शिवूर एवं भागीरथी साहू सड़क पर इनकी तरफ से 50 रुपए, दुलारी साहू मिस्त्री कामकी कनीस इनकी तरफ से 20 रुपए, कोमल सुजल समीप पेटी वाले की तरफ से 20 रुपए, शिव कुमार साहू पीतमपुरिया की तरफ से 50 रुपए, आनंद कुमार की तरफ से 50 रुपए एवं शारदा पुरस्कार राम कृपाल साहू सरपंच ग्राम पंचायत टपोरिया की ओर से 200 रुपए से सम्मानित किया गया। लखन से रामचंद्र की जय।
तो क्या चाहिए सारे तो शांत जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम देख लो बता दो जय श्री राम 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 जय श्री राम
वर्तमान पार्टी का समय है 4 पर कीर्तन से प्रारंभ हो रहा है। आप सब गाना गाने की बात कर रहे थे और कहते काना में जी गाना और साथ में कही काना में जी गाना और साथ में कही सभी प्यार बोली हमें हम चतुर मैं चाहूँ एक बार हाथ पकड़ करके मीठे मीठे से छत्तीसगढ़ का आयोजन करवा जाए। बोलो छत्तीसगढ़ माता की लक्ष्मी सिया
श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुंदा जो माय राम की सूर्य प्रसाद से कथा प्रसंग उत्तरदायी में जाते हैं। आज भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास से वापस आ गए। सुंदर वहां आज राजा बने हैं। अवधपुरी का कहे तो पूरा भारतवर्ष राममय बन गए। काव्य लिखते हैं गुरु महाज्ञानी गुणराशि हरि सेवक निकट। हे गुरु जी, आप तो साक्षात विष्णु भगवान के वाहन। आप सदा भगवान विष्णु के किनारे पर रखा हरि के सेवक का हरि सेवक के निकट निवासी। आप सदा हरि के किनारे यानी निकट पर रखा और हर समय भगवान के दर्शन कर रहा। देवी देवी कारण दर्शन तो गुरु जी तो आप लकार के चित्र है और देवी देवी दुकान का सरनाई सूची कथा पूरी निकल रही है। तो आपका लकार जो पढ़े एक काग के द्वारा आपका भगवान की कथा का सुना था। एक प्रकार से बात सुनने महाराज जी गरुड़ जी कहते हैं कि आदि कोई बरकत
अमोल शिव सादर सुख पाई। राम कथा की सुनिया आज भगवान शंकर जी अपन प्रिय पार्वती कैलाश की पर्वत सुनार में कि हे प्रिय पार्वती आज दोनों भक्त काक महाराज ने गरुड़ शंकर एक दूसरे का प्रभु की भक्ति अवतार थे और दो हरि भक्त आग पूर्ण गाना दोनों हरि भक्त एक दूसरे का कहते कि आप बड़े विष्णु भगवान के किनारे वो कहते कि आप बड़े भक्त दो की गिरा सुखी तरह से माता पार्वती एवं के स्वभाव एवं के हरि भक्ति देख करके वो ऋषि साधन सुख पाई। शंकर भगवान की कर दोनों हाथ जोड़ करके कि हे स्वामी एवं बहुत बड़े हरि धन्य हो गए ऐसे शंकर के दर्शन करके आओ जी बीते के प्रेम करते राम Thank you.
सुनो परम मुनि देवी माता, जो सुनहि सकल दुनिया भगवान बोलता थोड़े भंडारी जी ने ये सभी आप धन में हमारा आप की बुद्धि और आप के पवित्र चरित्र देख करके आप के श्री भाई बहुत आनंद हो सुनकर परम दुखी की आशा भगवान शंकर की बात का सुन रही माता पार्वती जो सुनी सकल माता पार्वती भी बहुत खुश हो गई कांवर की शंकर भगवान के पुत्र अपन बड़े दर्शन करके सियावानी से चले बोल श्याम रामचंद्र की पगड़ित कथा उपजई राम
शंकर भगवान ने दी की अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी के ये जैन प्राणी श्री रामचंद्र जी के चरण का विश्वास और प्रेम रखते वो मनुष्य है ये भवसागर से बिना प्रयास के बिना मेहनत पार हो जाता दिन हर भगवान राघवेंद्र सरकार ने श्री चरण कमल में विश्वास श्रद्धा प्रेम से भजन उपासना करके वो प्राणी बिना मेहनत के ये भवसागर से पार हो जाते हैं तो भगवान के जो काम है वहाँ चलते थे इस प्रकार की कथा प्रसंग कर दिया और इसी जगह का Thank you.
अब रखिएगा जना वही बच्चा बात है जना के मन को दान होते जना वही बच्चा बात है जना के मन को दान होते अब ताकि वही बच्चा जना के मन को दान होते सब जन के हाथ आगे दोनों हाथों को ले पहना गया है बोल श्री रामचंद्र की जय हो ओके है का अन्ना अन्ना लहर से रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित खुशी रजक मानस मंडली सुपदराई भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से गाकर हम सभी को आनंदित किए। अभी कथा श्रवण करेंगी इनके स्थान पर विश्वनाथ मानस मंडली जयवीर आप अपने पार्टी सहित मंचस्थ होकर भगवान की अमृत में कथा को आगे बढ़ाएं और आगामी के लिए सुरेखा मानस मंडली शिवरी नारायण आगामी के लिए सुरेखा मानस मंडली शिवरी नारायण आप अपने पार्टी सहित तैयार रहेंगे। उसके आगामी ज्योति मानस मंडली गोधना तैयार रहेंगे। उसके आगामी जीवन ज्योति मानस परिवार से नरस सचिवा तैयार रहेंगे। उसके आगामी पुष्पा मानस मंडली और सदा कला शक्ति तैयार रहेंगे। वर्तमान पार्टी को लक्ष्मी नारायण गुरु जी शिव और भागीरथी साहू सड़क थाना द्वारा 50 रुपए, पिंकी साहू संस्कार साहू उनके द्वारा 50 रुपए, रेत माफिया राहुल ट्रांसपोर्ट द्वारा 50 रुपए, रेत माफिया एंड ट्रांसपोर्ट सोनू यादव जी एंड महेंद्र पाल एंड जितेंद्र इनके द्वारा 51 रुपए, दुलारी साहू मिस्त्री कामनी कनीस इनके द्वारा 20 रुपए, ओमन सुजन समित पेंडे वाली तरफ से 20 रुपए, मेरे गरीब दोस्त के द्वारा
गोलू, भवानी साहू, अमर साहू, अंशु, राहुल, राकेश, करण, अभय, वीरेंद्र, हरीश साहू, इनके द्वारा गरीब परिवार है ना, इनके द्वारा 51 रुपए और गौरव साहू प्रसादा वाली तरफ से 100 रुपए, लाला राम साहू, टीकाराम साहू इनके द्वारा 50 रुपए, विनोद साहू उप सरपंच इसके द्वारा 20 रुपए, कामलेश्वर गोलू इनके द्वारा 50 रुपए, रथराम साहू सिपाही इनके द्वारा 50 रुपए से सम्मानित किया गया। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। एक दानदाता का नाम छूट गया है, पैसा तो चला गया है, नाम बोलना छूट गया था। दीपक साहू उनके द्वारा 50 रुपये का सम्मान किया गया था।
लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी मंच पर उपस्थित विश्वनाथ मानस मंडल के आगे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से गाकर हम सभी को कृतार्थ किए। अब ये कथा श्रवण करेंगे। इनके स्थान पर सुरेखा मानस मंडल जी शिवरी नारायण आप अपने पार्टी से मंच समूह कर भगवान की कथा को आगे बढ़ाएं और आगामी के लिए ज्योति मानस मंडली बोधना आगामी के लिए ज्योति मानस मंडली बोधना अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके स्थान पर उसके आगामी जीवन ज्योति मानस परिवार से विरसकर सीमा तैयार रहेंगे। उसके आगामी पुष्पा मानस मंडली पर सदा कला शक्ति तैयार रहेंगे। उसके आगामी प्रमोद चंद्र मानस मंडली माड़ा जयपुर तैयार रहेंगे। उसके आगामी ममता मानस मंडली कोरबा तैयार रहेंगी। सुरेखा मानस मंडली शिवरी नारायण आप अपने पार्टी से मंचस्थ हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा बढ़ाएं। वर्तमान पार्टी को पीपी समूह संस्कार समूह की ओर से 50 रुपए आए मेरे गरीब दोस्त के द्वारा, जिसमें है गोलू, भवानी, अभय, नीलेंद्र, राहु और अमर, राकेश, टिकेश्वर, इन सभी गरीब दोस्तों के द्वारा 51 से पुरस्कृत किए गए हैं। लक्ष्मी नारायण गुरु जी सिंह और भागीरथी साहू सड़क पर नवागढ़ की ओर से 50 रुपये से सम्मानित किया गया। लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ, सभी पार्टी से निवेदन है, अगर उपस्थित हो
तो यहाँ पंडाल के अंदर आने की कृपा करेंगे। सुरेखा मानस मंडली शिवरी नारायण, आप अपनी पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान के अमृतमय कथा को आगे बढ़ाएं। सुरेखा मानस मंडली शिवरी नारायण की अनुपस्थिति में ज्योति मानस मंडली गोधना, ज्योति मानस मंडली गोधना, आप अपने पार्टी से मंचस्थ होकर भगवान के अमृतमय कथा को आगे बढ़ाएंगे। और आगामी के लिए जीवन ज्योति मानस परिवार से शिवा, आगामी के लिए जीवन ज्योति मानस परिवार से शिवा आप पंडाल के अंदर बैठने की कृपा करेंगे। उसके आगामी पुष्पा मानस मंडली प्रसदा कला शक्ति, आप अपने पार्टी से तैयार रहेंगे। उसके आगामी प्रमोद चंद्रा मानस मंडली पाड़ा हल्दी जयपुर, आप अपने पार्टी से तैयार हैं। और ममता मानस मंडली कोरबा, आप भी अपने पार्टी से सजग बनाकर रखेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। એમાં બધે 13 મિનિટ આવું ઓચીપમાં કરીને છે 13 મિનિટ બસ બચે ચીપ હવે તો ये देखा है छूटे का है तो आम करे मानस पूजा और अपना के सामने बैठे भगवान के भजन मानसिक पूजा करे, मानसिक पूजा करे। अकल के भजन आज नहीं पूजा, भगवान के भजन सुन करके पार्वती तो काम की कही से और कोई दूसरा काम नहीं। इस प्रकार का भगवान शंकर देखिए पार्वती लिखते हैं इन्हीं से करता है। Thank you.
बोल श्याम रामचंद्र की जय। मंच में विराजमान ज्योति मानस मंडली घोषणा भगवान राम की पावन कथा को बहुत सुंदर गा करके सभी श्रोताओं को पहुंचा करके हम उसके लिए बहुत बहुत से आभारी हैं। अब वो कुछ समय के लिए कथा का रसपान करेंगे। इनके स्थान में जीवन ज्योति मानस मंडली सेंद्रा सचिवा को साधारण आमंत्रित हैं। इनके मंच में उपस्थित होने की अपेक्षा करेंगे जीवन ज्योति मानस मंडली सेंद्रा सचिवा और आगामी पारी होंगे पुष्पा मानस मंडली प्रसदा कला शक्ति और वर्तमान पार्टी को लक्ष्मी नारायण गुरु जी शिव और उनके भागीरथी साहू ये सड़क करा वाले हैं। इनकी तरफ से 50 रुपया, पिंकी साहू संस्कार साहू के द्वारा भी 50 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ है। लखन श्री रामचंद्र की जय। चलांदे 1 घंटा अरे कहाँ कर देखो 30 से देखा मेन चीज़ नेटवर्क में कह रहे हैं पूरा फुल सेटअप रही थी दोनों एक के मरी थी क्लिक कर रहे हैं तो नेटवर्क वाईफाई लागू के किसे कोड के वाला मेरे भाई में प्रॉब्लम
हरि हरि लखन श्री रामचंद्र की जय। वर्तमान वाले का समय प्रारंभ हो रहा है 7:04 से। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में सुशोभित आदर्श ग्राम ठाकुरदिया की समस्त ग्रामवासी गुरुजन विप्रजन निर्णय बंधु और बाहर से आए हुए जितने भी मेहमान कलाकार हैं, आप सभी के इस पावन चरण में हमारी जीवन ज्योति मानस परिवार सरसेवा सारा की ओर से सादर प्रणाम है, उसको स्वीकार कीजिएगा। आइए मैं चाहूंगी एक बार भजन शुरू करने से पहले जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं मीठे मीठे तालियों के साथ जयकारा हो जाए। फिर आप सभी को भजन की ओर तो चलिए दो द्वार पर करके जयकारा लगाना है। बोलिए श्री राम। आइए सर्वप्रथम शिव जी का बहुत ही प्यारा एक भजन है।
आइए कथा प्रसंग उत्तरकांड और उत्तरकांड के अंतर्गत आज माता पार्वती है शिव जी से पूछती है कि हे नाथ एक कौवे ने कैसे श्री राम जी की कितनी सुंदर कथा कही और जो बल बुद्धि के निधान में जो गुणों से भरे हुए ज्ञानी पुरुष गरुड़ जी हैं वे कैसे एक कौवे से श्री रामचंद्र जी की कथा को सुने। इस कथा को मुझे समझाइए, बताइए। तब शिव जी ने क्या कह रहे हैं माता पार्वती को, सुनहि सकल मत की महिमा बस निरंतर जीते तारा जब मैं जाई सो तुम देखा पूर्व जानंद विशेषा। शिव जी ने कहते हैं जब तुम सती के रूप में आई थी और जब तुम सती के रूप में आई थी और तुम जब चली गई थी तो मैं तुम्हारे वियोग में वन वन भटकता था और वहां पर पहुंचा जहाँ पे काकभूषण जी रहते थे। वहाँ सुंदर तालाब था, पीपल के पेड़ थे, वहीं पर काकभूषण जी सुंदर श्री रामचंद्र जी की आराधना करते थे और उनका पसंद करते थे। और जो निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा तालाब पर बसते थे, पशु पक्षी थे, वही उस कथा को सुनने आते थे। जब मैंने उस कौतुक दृश्य को देखा तो मेरे मन में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ, हर्षित उत्पन्न हुआ कि मैं भी जाकर वहाँ पे क्या हो रहा हूँ उसको देखूं। तब मैं भी वहाँ पे गया। इस प्रकार जो है संत जी अपनी प्रिय पार्वती को सुना रहे हैं। कोई राम जी की आइए पार्वती क्या कर रही है।
शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जब मैंने उस कौतुक दृश्य को देखा तो मेरा मन आनंदित हुआ कि मैं वहां जाकर के क्या हो रहा है उसको सुनूं। तब मैंने हंस का रूप धारण किया और वही कुछ दिन निवास किया जहाँ काकभूषुंडी जी सभी कथा को सुना रहे थे, प्रसंग को सुना रहे थे। और फिर मैंने वहाँ निवास करके श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुना, उनकी कथा को समझा और मेरे मन में बहुत हर्ष हुआ, आनंद हुआ। फिर मैं कैलाशपुरी जो है वापस लौट आया। इस प्रकार से जो है शंकर भगवान जी अपने प्रिय पार्वती को सुना रहे हैं, कह रहे हैं बोली राजा रामचंद्र की जय।
बोली राजा रामचंद्र की गिरिजा कही उस समय की भाषा मैं जिस समय गए घर पासा अब सो कथा सुना जी तो मैंने तो अभी वह इतिहास कहा कि मैं किस प्रकार से काकभूषुंडी जी के पास गया और इस कथा को सुना। अब तुम इस इतिहास को सुनो, इस कारण को सुनो कि किस कारण जो है कक्षीराज गरुड़ जी ने एक काक से काकभूषुंडी जी से इस कथा को सुनने को चले गए, जबकि वे बहुत ही ज्ञानी विद्वान हैं। फिर भी वे काक से प्रभु श्री रामचंद्र जी को कथा को सुनी, उनके साथ गए। इस कथा को तुम सुनो। इस प्रकार से जो है शंकर जी ने अपनी प्रिय पार्वती को कह रहे हैं, बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। आइए एक प्रस्तुत एक और बहुत ही प्यारा श्री राधा कृष्ण जी का फिल्मी भजन।
जी हैं, कहते हैं कि मुझे रघुनाथ जी की वह लीला एक ऐसी लीला की थी, उन्हें एक ऐसी रंग लीला की थी जिसे मुझे सोचने में भी, समझने में भी और कहने में भी बड़ी लज्जा आती है। जो तीन लोक के स्वामी हैं, स्वयं जगतपति हैं, वे खुद आकर मेघनाथ के हाथों नाग पास में बैठे थे। जबकि वे चाहते तो उसे छुड़ा सकते थे, स्वयं ही हटा सकते थे, पर वे मनुष्य योनि में थे, इसलिए उन्होंने ये रणलीला की, क्रिया की कि वे मेघनाथ के हाथों नाग पास में बन गए। तब नारद मुनि ने जो है गुरु जी को भेजा कि आप जाइए और उनकी नाग पास में बंधे हुए हैं उसको छुड़ाइए। इस प्रकार जो है शंकर भगवान का प्रिय पार्वती को मिल रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र जी की
जब जरूर जी ने वहाँ आए जहाँ सिराज के देवी आसपास में बैठे हुए थे और फिर वे जो कि सर्पों के भक्षक हैं, सर्प उनके दुश्मन हैं, तो उन्होंने उस बंधन को काटा और फिर वहाँ से चले गए और फिर उन्हें मन में बड़ा विचार हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो तीन लोग के स्वामी हैं जो सभी कार्यों को एक उंगली से कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने इस नाग को काटने के लिए मुझे बुलाया। ये सोचकर वे बड़े ही आश्चर्य हुए, उनके मन में जो विश्वास उत्पन्न हुआ और प्रभु के बंधन का स्मरण करते हुए संतों के शत्रु गरुड़ जी ने बहुत प्रकार से विचार करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो कथा को शंकर भगवान अपनी पीठ बच्चे को सुना रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय। मंच में विराजमान जीवन ज्योति मानस परिवार सेंद्र सरसीमा भगवान राम की पवन कथा को बहुत ही सुंदर हेलो जीवन ज्योति मानस परिवार चंद्र सरसीमा बहुत ही भगवान राम के कथा को हम सबको आनंदित किए। हम उसके लिए पूर्ण से आभारी हैं। अब वो कुछ समय के लिए कथा का रसपान करेंगे। इनके स्थान में पुष्पा मानस मंडली परिषदा कला शक्ति को साधारण मंत्री हैं, कृपया मंच में विराजमान होकर के कथा को आगे की ओर ले जाने का कष्ट करेंगे। और आगामी पाली के लिए प्रमोद चंद्रा मानस मंडली मारा हरदी जयपुर और उसके आगामी होगा ममता मानस मंडली कोरबा। बस 2 पार्टी बचा है। उसके बाद में बस आज का कार्यक्रम जो है हमारा जितने प्रतिभागी हैं पूरा हो जाएंगे। तो पुष्पा मानस मंडली परिषद को शक्ति हाँ वर्तमान पार्टी को कुछ पुरस्कार हैं। शिव कुमार साहू ये कुमरी वाला तरफ से 50 और लक्ष्मी नारायण गुरु जी सियोर और भागीरथी साहू
सड़क पारा के द्वारा भी 50 रुपया का संप्रम है। पिंकी साहू संस्कार साहू के द्वारा 50 रुपया तथा पद्मनी भुवनेश्वर साहू के द्वारा 50 रुपया एवं वृक्ष राम साहू के द्वारा 20 रुपया, महेश्वर धीमेश और प्रतिभा काका प्रतिभा के द्वारा 20 रुपया और अनिल साहू के द्वारा 20 रुपया का संप्रदाय प्राप्त हुआ है। लखन सिंह रामचंद्र की जय।
हेलो चेक हेलो जय श्री राम चेक चेक जय श्री राम जय श्री राम चेक हेलो जय श्री राम चेक हेलो चेक हेलो जय श्री राम चेक जय श्री राम हरि जय श्री राम जय श्री राम हरि जय श्री राम हरि जय श्री राम हरि हर श्री राम बोल से रामचंद्र की जय 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 श्री राम उपस्थित मानस पाली जो भी उपस्थित है उनके पाली जो है 7:50 से चालू हो रहा है। ये आप 50 बोले श्याम रामचंद्र की जय आओ बड़ा पावन सुंदर गांव ठाकुरदिया के पावन धाम में अमृत पे अखंड नवधारा नारायण के प्रगट के दिवस जेमा पुष्पा मानस विवाह पर सदा कला शक्ति आप सब के बीच में भगवान की भक्ति भजन भाव से आप सब के बीच में पहुंचे हैं और पुष्पा मानस विवाह पर सदा कला शक्ति आप सब पर चर्चा शुरू करते हैं और शक्ति के भाव में जल्दी से जल्दी का एकदम शुरुआत करते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके लेके आना होता है बोला रामचंद्र की जय आओ
सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी का एक गाना सा भजन प्रस्तुत है। उसके पहले सभी से निवेदन है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकार हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिया राम लखन सिया राम चंद्र की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुल सुधा बरी नवर गुहरी विमल जसु जोदायक फल जा बुद्धि संजान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करे करे सेविका ये पावन भैया एक ठाकुर दिया के ये मानस में विराजमान रामचरित मानस के कथा के सुनिया करुणामयी ममतामयी हमार माता सकरी नाना छोटे छोटे लड़का हमार नौजवान साथी साथ ही साथ मानस मंत्र सजाने वाला यहाँ पे हमार बुजुर्ग सियान एवं ब्रह्मा विष्णु महेश के समान दूध और पानी के अंतर स्पष्ट करने वाले हमारी ये समिति साथ ही साथ बाहर से आए हुए हमारे जम्मू कलाकार मिला हमारे पुष्पा मानस परिवार प्रशंसक की ओर से आप सबके चरण कमलना कोटि कोटि विनम्र प्रणाम हवे अब कथा कथन उत्तरकांड आज ये उत्तरकांड में आप जी गरुड़ जी के पास कथा कर रहे हैं उसी कथा को भगवान शंकर जी मां पार्वती के पास आ रहे हैं अब बोल रहे हैं व्यापक ब्रह्म बीरज बागीसा माया मोह पार परमेशा सो अवतारे सुनहो जग माही देखो तो प्रभाव कछु नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब नागपाश मंदिर का द्वारा उन्हें नाग के द्वारा वो कबूलिया जाकर के वो नागपाश अपन शक्ति के द्वारा अपन सोच के द्वारा वो शक्ति लभी कर रही से आज वही व्यापक ब्रह्मांड के बाकी सा जे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज आज नर उद्धार करके इस समस्त संसार का ये बता हवे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज मोह और माया से परे हवे तो अवतार सुनो जग माही इस समस्त संसार जब कोई अवतार देखेगा तो एक अवतार के प्रभाव देखो तो प्रभाव कछ नहीं जाना तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का कोई कुछ समझ नहीं पाते काबर कि एक नागपाश मां काकर द्वारा मेघनाथ के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नागपाश और जगदीश और प्रभु कैसे नर लीला करिस तेरा कोनो समझ नहीं पाता हवे अब नीचे चौपाई पर नजर करी प्रेम से बोल किया रे रामचंद्र की जय
से आइए आप सभी के समक्ष में प्यारा सा छत्तीसगढ़ी भजन माया घर
भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। आज भगवान शंकर जी उमा पार्वती कहते थे कि हे उमा इस समस्त संसार में भव बंधन से छूट ही नर जकर जप के नाम से ये समस्त संसार भव बंधन से छूट जाते। आज वही निशाचर के नाम पास में बंधे हमारे आज इस प्रकार का कथाला भगवान शंकर अपने प्रिय पार्वती के पास में कहे हमारे प्रेम से बोलते हैं रामचंद्र की जय। Oh,
रामचंद्र की जय। नाना भात मनुष्य समझावा प्रगट न ज्ञान हृदय धर्म छावा। खेद खिन्न मन करके बड़ाई भयो मोहब्बत तुम रही नाई। बाबा शंकर जी के उमा पार्वती के पास में गए थे कि हे उमा, सुंदर जी महाराज गरुड़ जी ने एक प्रकार की कथा न समझा थे, लेकिन गरुड़ जी की कथा कुछ समझ में नहीं आया। काबर नाना प्रकार के अनेक अनेक प्रकार का समझा रहे थे, बल्कि ऊपर हृदय प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। ओकर हृदय में और अनेक प्रकार के भ्रम छा जाते, समझ नहीं है बोला कि होश का है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के विराजा के अंदर ये समस्त संसार के तीनों लोक के मालिक है। और बोला मेघनाथ के नाम पासा बांधिस ये बात बार बार सोचते रहते हैं, अपन मन करते करते पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आए। काबर भगवान शंकर जी कहते ही उमा वो तोरे का समूह के बाद पकड़ करके आज तो समझ में नहीं आते। गरुड़ जी के ऐसे प्रकार के पावन पवित्र कथा का भगवान शंकर जी भगवान आज माता पार्वती के पास गए हमें प्रेम से रामचंद्र की जय।
भट प्रिया चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। व्याकुल गयो देव सिपाही, कहीं सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दया, सुनो भक्त प्रबल राम के माया। आज गरुड़ी के हृदय व्याकुल हो गए और व्याकुल हो करके आज नारद जी के पास आ गए और नारद जी का एक प्रकार का प्रश्न है कि वो बिल्कुल समझ नहीं आते। हे गरुड़ी, हे नारद जी, आखिर हो क्या है? बिल्कुल मोर समस्त माया से परे हवे। सुनो भगत प्रबल राम के माया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो माया हवे। नारद जी महाराज कहते कि श्री रामचंद्र जी की जो माया हवे इस संसार से परे है। बोले समस्त संसार समझ पाना अति मुश्किल हवे। प्रेम से बोल किया बोले रामचंद्र की जय। और कुछ हनुमान जी का क्या समझ है? बोले हनुमत जी महाराज की जय। हो जैसे उसकी संगत
अभी बोल श्याम रामचंद्र की जय। अभी हमारे बीच में पुष्पा मानस मंडली प्रसादा कला शक्ति भगवान राम के पावन कथला बहुत ही सुंदर गा करके हमारा सुनाई हवा है। हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते वाला अब भैया मन हवा है ये मन कथा के रसमान करी। अब एक जगह में प्रमोद चंद्र मानस मंडली पाड़ा हाथी जयपुर ये मन हमने साधारण कथा कृपया करके मंच में पहुंचा है और भगवान राम के पावन कथा हम सुनाए का प्रयास करें। आगामी आज का लास्ट पाली है ममता मानस मंडली खोरबा ये लास्ट पाली हम जो बुला रहे हैं के वो तैयार रही। आगामी पाली के लिए ममता मानस पार्टी अपन साथी से तैयार रही। लखन से रामचंद्र की जय। और वर्तमान पार्टी के पास है पुरस्कार में आपन बीच में रखा हम दुर्गा लाला साहू सारा शक्ति वाले तरफ से 101 रुपया और पिंकी साहू संस्कार साहू 50 रुपया लक्ष्मी नारायण गुरु जी ये शिव वाला है और भागीरथी साहू ये सड़क पारा यमन की तरफ से 50 रुपया भानु असवानी हिमांशु और गौतम और तनुष यमन की तरफ से 50 रुपया हवा और संतोष साहू जी रायगढ़ खम्मन साहू ये दोनों की तरफ से 50 रुपया भी हवा। साथ साथ भानु फोटोग्राफी वाला 50 रुपया स्नेहा ऋतु जागृति 50 रुपया मोटू अनिल साहू की तरफ से 20 रुपया मानसी एवं तानसी पुत्री एक तरफ से 50 रुपया शिव कुमार साहू 50 रुपया लोकेश की तरफ से 20 रुपया जयराम साहू 20 रुपया और धीरज साहू जूता वाले 50 रुपया। ये सब वर्तमान पाटीदार पुरस्कार के रूप में गायन विद्या में कुछ होकर के दे हवा। लखन श्री रामचंद्र की जय। वो
हर